Hello everyone, welcome to the Organon Classroom with Dr. Gazala. Here we are with episode 2 of our lecture series for the chronic miasms by J. H. Allen. Our last video spoke beautifully about the concept and the general idea of this book. Today onwards, we are going to start discussing those concepts which were mentioned earlier. Starting off today, the first one being the discussion or the relationship between pathology and chronic miasms as given by Hahnemann and J.H. Allen. It's an MUHS repeated question, so it becomes all the more important to understand its framework. Well enough, so let's start with the first slide. All right then. So the battle for the medical paradigm. पैराडाइम मतलब एक मॉडल होना, पैराडाइम मतलब एक फ्रेमवर्क होना. ठीक है, सो द बैटल फॉर द मेडिकल मॉडल और द मेडिकल फ्रेमवर्क हैज ऑलवेज बीन देयर. इट्स बीन देयर सिंस टाइम इमेमोरियल. ठीक है, अब इसके दो कंपोनेंट्स है, दो ओपोनेंट्स है. एक है हैनेमेनियन फिलोसफी, द वन व्हिच वी नो इन डिटेल, एंड द अदर वन इज कॉक्स एंड फॉलोअर्स. ठीक है, तो हैनेमेनियन फिलोसफी में क्या होता है, व्हाट इज द कॉज फॉर आर डिजीज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज पैथोलॉजी. ठीक है, वी आर स्टडिंग अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ पैथोलॉजी एंड क्रोनिक माइजम्स, राइट. सो पैथोलॉजी का मतलब क्या है, वर्ड मीनिंग क्या है. सेकेंड ईयर रिवाइंड करो, पैथोलॉजी का एकदम बेसिक ग्रीक वर्ड पैथोस लोगोस, राइट. पैथोस मतलब डिजीज, लोगोस मतलब स्टडी. सो द स्टडी ऑफ दोज डिजीजेस, स्टडी ऑफ द डिजीजेस मतलब उसकी इटियोलॉजी. इटियोलॉजी का मतलब क्या है, द कॉज ऑफ दैट डिजीज, राइट. सो स्टडी ऑफ दैट कॉज ऑफ द डिजीजेस इज कॉल्ड एज पैथोलॉजी. सिंपल है, जनरल है. ठीक है, तो हैनेमन के अकॉर्डिंग डिजीजेस क्यों हो रही थी, हैनेमन के अकॉर्डिंग डिजीजेस इसीलिए हो रही थी बिकॉज देयर वाज a change or an alteration in the dynamic vital force, right. What do we call diseases as? Derangement of the healthy vital force. Okay, so diseases is nothing but fundamentally a disturbance of the invisible life force. The dynamic disease creates and controls the organism, synchronizing processes into a healthy state or deranging them into illness. Okay, the next opponent of it is Koch and followers. You know who's Koch? Robert Koch. He's the father of medical bacteriology. And later on, we'll also study about Rudolf Virchow, who is the father of cellular pathology. अब इनके बारे में even Stuart Close has spoken about quite extensively in the chapter Pathology of Homeopathy. If it doesn't ring a bell, do not worry. We are going to cover that in our SRK series. Okay, so what did this group believe? That disease is an invasion by microscopic chemical entities. They denied the existence of living vital force, treating life as purely chemical, believing the cause of disease could even be demonstrated in a dead body. ठीक है, तो अब डेमोन्स्ट्रेटेड इन द डेड बॉडी का मतलब क्या है, जब वो पोस्टमार्टम करेंगे और उनको जो चेंजेस दिखेंगे ऑर्गन्स में, ग्रॉस एग्जामिनेशन में, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन पे, एंड ऑल ऑफ दिस टुगेदर, तो दे विल नो व्हाट द कॉज ऑफ डिजीज, हाइपोक्सिया हुआ है या क्या हुआ है. ओके, तो what we believe, what Hahnemann has believed, that is only the last and the final thing, or the change which the body is showing to you. Change, the disease had already started earlier. ठीक है, ये तो आपको सिर्फ फाइनल प्रोडक्ट बता रहा है. सो इवन इन आर ट्रीटमेंट वी आर नॉट ट्रीटिंग द फाइनल प्रोडक्ट विच इज द साइंस एंड सिम्टम्स, राइट. वी आर ट्रीटिंग द मैन इन दैट डिजीज. ये अपना कंसेप्ट है. ठीक है, एंड कॉक्स एंड फॉलोअर्स जो पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी और माइक्रोबायो वाले हैं, दे बिलीव दैट द कॉज इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी मटीरियल विच कैन बी सीन ऑन द माइक्रोस्कोप. ठीक है, तो अभी कॉज जब मटीरियल हो जाता है, वी स्पीक अबाउट मटीरिया पेकेंस. वी रिमेंबर दैट हैनेमैन हैज स्पोकन अबाउट इन 6th एडिशन अबाउट मटीरिया पेकेंस. तो उसका ट्रीटमेंट भी क्या हो जाता था, टोलेकॉजम. डू वी नो दैट, रिमूविंग द मटीरियल कॉज ऑफ द डिजीज. तो जब कॉज निकल जाता था, इट वाज कि डिजीज क्योर हो चुकी है, right. So the modern scientific obsession with the material, the bacteria, threatens the understanding of the dynamic vital force, right. And next, all right then, so the toxic toll of the physiochemical approach. ठीक है, so whenever there's a new bacillus which is discovered, the immediate goal is to destroy the organism. Pathogen khatam, disease khatam. ठीक है, so destroy the
morbidity. Second is empirical application. Bold experimenters apply toxic elements like vaccines and viruses without an inductive law or principle. Inductive law matlab logic, something that we use with our Hahnemannian principles in homeopathy. ठीक है, तो ये यहाँ पे follow नहीं हो रहा है. Then the toxic load accumulation, very important. The toxic effects of the remedies spread havoc on the patient's economy. Now the patient has already been drugged by so many means together कि उसका toxic load in the body has increased, and that is not because of sometimes of the disease, that is most of the times because of the innumerable empirically mix and match medications that he has taken in the past. ठीक है, so destroying the bacteria without addressing the life force fails to lower mortality. Instead it creates a drug induced disease state that makes the original condition worse. ठीक है, so when the patient is coming to us, we do not really know कि those are the disease symptoms or those are the extreme drug symptoms that he is showcasing to us, right? तभी यहाँ पे जब टॉक्सिक लोड ज्यादा हो जाता है ना, तो तभी ड्रग रेजिस्टेंट कंडीशंस हो जाती है. व्हेन यू हैव टेकन सम मेडिकेशन सो मच एंड इन सो मच ऑफ एक्सेस दैट इट ओनली स्टार्ट रेजिस्टिंग your body and for the symptoms that it is indicated for, right, when empirically given. So this toxic load accumulation becomes a very important concept for us to know. The dynamic engine of cure. ठीक है, अभी सबसे पहले तो सेल्यूलर पैथोलॉजी और वाइटलिज्म जब हम बात करते हैं ना, तो वी शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड दैट बिफोर हैनेमन द ऑर्थोडॉक्स स्कूल जो था ना, इट रिलाइड ऑन Virchow's cellular pathology theory, which formed the basis of medicine for over 20 years. ठीक है, Virchow या Virchow आप जो भी बोलो. And then this school focused on chemical processes within the cell, but it failed to recognize the hidden vitalism or the vital force within those cells. This materialistic view led to the development of complex chemical therapeutics, जो vaccines और viruses हमने पढ़ा, formulas and multiplicity of compounds and found इन ट्रेडिशनल प्रिस्क्रिप्शंस. ठीक है, अब इसके बाद में जब हैनेमन का साइंटिफिक ऑर्डर आया, द हैनेमेनियन इंजन ऑफ क्योर, द हैनेमेनियन प्रिंसिपल ऑफ क्योर. ठीक है, तो वो क्या था? इट वाज टू रिस्टोर द ऑर्डर फ्रॉम मेडिकल केओस. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस व्हाट डज इट हैपन फॉर अस? द derangement, which is the harmonious function of the vital force, is disturbed, right? Bacteria अब हो सकता है are a result of the perversion and not the cause. Restoring the vital force ends their existence. ठीक है, bacteria are a result of the perversion. Perversion का मतलब क्या होता है? Something which is not favorable, something which is not pleasant, or something that we do not like. ठीक है, जो harmful हो जाता है, which is not normal. ठीक है, so that is not going to be the cause. The cause is always going to be dynamic. ठीक है, डायनामिक, तभी जाके वो डायनामिकली अफेक्ट करेगा ना अपनी डायनामिक वाइटल फोर्स को, राइट? समझने वाली बात है. डिरेंजमेंट हो गया, उसके बाद आएगा एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन कैसे आएगा? साइंस एंड सिम्टम्स विल अपीयर, बैक्टीरिया विल मैनिफेस्ट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस परवर्जन. ठीक है, उसके बाद आएगा डायनामाइज्ड मेडिसिन. रेमेडीज आर अप्लाइड बेस्ड ऑन द नेचुरल लॉ टू रिस्टोर द लाइफ प्रिंसिपल, सिमिलिया सिमिलिबिस क्यूरेंटर यहाँ पे आता है. Fourth is going to be restoration. The vital force resumes normal function. The internal environment changes, putting an end to the existence of the microorganisms. ठीक है, अब ये जो restoration होगा, this is going to be long enough, और next time when the patient is again उसकी vital force derange होती है और उसको जब similar symptoms आते हैं, तो या तो it's going to be a different disease, या तो उसकी intensity is going to be quite low, the severity is going to be low. ठीक है, so this is how Hahnemann wanted to restore the order, and this is our medical paradigm. This is our medical model. Okay, so Hahnemann conducted a detailed study of the old school and found it lacking in principles and scientific basis. He introduced fixed principles and substantial laws such as the seven cardinal principles that stood the test of time. Okay, do we know the seven cardinal principles, guys? If not, go back and revise. ठीक है, unlike the ever changing and unsettling concepts of the medical system, homeopathy brought to order a chaotic medical world. Okay, now the miasmatic load and disease manifestation.
J.H. Allen जो है, he has argued that for a case to be truly cured, a physician must be able to distinguish between different miasms, and those are psora, psychosis, syphilis, and tubercular. Tubercular miasm is considered as a combination of psora and syphilis, so that becomes the pseudosora for Allen, right? A true simillimum is always based on the existing basic miasm, whether the physician is conscious of it or not. The curative remedy must cover the pathogenesis of the active miasm to complete the work of cure. ठीक है, तो miasmatic load and miasmatic disease manifestation क्या बोलता है अपने को? Latent miasm plus favorable environment is going to give us active disease manifestation. हम लोग ने जो miasmatic diathesis पढ़ा था फर्स्ट वीडियो में, जो वन ऑफ द गाइडलाइंस है ये बुक के लिए, तो उसमें what we had told that that is going to be the soil of the diseases which is going to manifest later, right? तो J.H. Allen क्या बोलता है, वो माइजम का जो माइजमेटिक डायथेसिस है वो लेटेंट माइजम है प्लस फेवरेबल एनवायरमेंट जो ट्रिगर्स आएगा, ठीक है, दैट इज गोइंग टू गिव यू एन एक्टिव डिजीज एंड द एक्टिव डिजीज मैनिफेस्टेशन। ठीक है, अब ये माइजमेटिक डायथेसिस अकॉर्डिंग टू एलन इज ऑल्सो इनहेरिटेड, हेरिडिटी में जाता है ये कॉन्सेप्ट, सो द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस वर्क्स ओवर हियर। ठीक है, तो व्हेन अ पेशेंट इज कमिंग अप टू यू, एलन सेज जो उसका एक्टिव माइजम है, तभी के टाइम पे यू आर गोइंग टू मैच योर सिमिलिमम, योर रेमेडी टू दैट, तब जाके वो सिमिलिमम बनेगा एंड तब जाके यू आर गोइंग टू गेट अ क्योर। ठीक है, so the miasm exists in everyone in latent state. Under favorable environmental influences, they activate. The heavier the miasmatic load in the background, the more difficult the resulting disease is to treat, right? तो latent state जो होता है, it is not for nothing, it's just called a latent state, right? latent sora के बारे में जब हम लोग अपनी miasm series में बात करेंगे, we are going to talk how big and how explosive that latent sora is to be. Similarly, जब कोई भी miasm का latent state होता है, it is the invisible miasmatic load imprinted from birth, according to J.H. Allen, and he says that the active expression, the disease symptoms, structural changes, and functional issues are the things that we see, which are perceptible to us. ठीक है, तो अपने को सिर्फ वो treat नहीं करना है, अपने को उसका जो latent stage में जो miasmatic load है उसको भी treat करना है, otherwise the patient will come to us with recurrent conditions all the time, and then we say homeopathy doesn't work. It's not the homeopathy guys that doesn't work, it's the homeopath who doesn't work. ठीक है, तो अगर अच्छे से काम करना है, अगर अच्छे से समझना है, तो अपने को माइजमेटिक डायथेसिस पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, माइजमेटिक लोड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। ओके, the anatomy of the tubercular miasm, how cool it is, right, to relate words, interrelated words of our subjects, anatomy and organon, right? So the anatomy of the tubercular miasm, so what is tubercular miasm? Is a pseudosora that Allen talks about. It is the tubercular miasm, sora and syphilis together. ठीक है, sora drives functional changes in the body, represents the physiological reversible stages of diseases, right? Syphilis drives structural changes in the body, represents the pathological irreversible stage of disease. तो बन जाता है pseudosora. अब tuberculosism का the gold standard is, or the most important point to tell a miasm to be in the tubercular miasm is उसकी erraticity. erraticity का मतलब समझता है अपने को, the changeability. ठीक है, it's not going to stay in one place, it's going to move. ठीक है, तो समझने वाली बात है, if that thing started up in sora and if it belongs to the tubercular miasm, it is not going to be in sora and only with functional changes, it is going to very quickly progress into something that we called as destruction and the pathological and irreversible stage of disease, matlab syphilis. ठीक है, इसी को एलन हैज टोल्ड अबाउट सूडो सोरा, a highly destructive blend of sora and syphilis. It creates a profound predisposition to tubercular processes. Under this miasm, disease rapidly travels from the reversible functional stage straight into the irreversible structural pathology. ठीक है, तो जो miasm होता है ना, this progresses
either forward, they might retreat, pause or rest. ठीक है, ये सब आ जाता है in the latent part. If it is moving forward, okay, only then we know कि अभी जाके perceptible signs and symptoms जो आते हैं, जो हम लोग समझ सकते हैं subjectively and objectively, that becomes to us our treating points, right? So each miasm has a unique mode of action and it attacks along unfamiliar lines. It is impossible to wage a war against these diseases without knowing the specific characteristic and the feature of the miasm. So it becomes important, guys, to know कि कौन से miasm के अंदर कौन से general manifestations आते हैं, किस type के physical particulars, mental particular, all of it is going to fit in. That is why studying miasm is important. Okay, and plus tubercular miasm, all the more pseudosora with J.H. Allen. The view of Professor Workow, father of cellular pathology, was he believed that the structural change begins purely in the cell. ठीक है, he claimed tuberculosis is acquired after birth, arguing he found no microscopic evidence of it in unborn babies. The view of Allen and Hahnemann was they argued Virchow failed to see the potentiality behind the cell. A cell only becomes diseased due to an altered dynamic state. The origin of bacteria is an inherited product invisible to early microscopic investigation. ठीक है, so the major part of it, the debate and the opinions about cellular pathology, matlab the material part of it, ठीक है, the material part of the pathology and the dynamic part of pathology. Okay, तो ये mention करना is very important when we are talking about Allen's views. Next is the chronology of the cellular degradation. Okay, डायनामिक ऑल्टरेशन होगा, अभी हम लोग जब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि नहीं सेल में डायनामिक चेंज हो उसके बाद ही तुमको माइक्रोब्स वो डेवलप होने वाला है, एंड ओनली आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू सी एंड ऑल ऑफ इट, ओनली आफ्टर एन इंटरेक्शन विद द इन्फेक्शन एज एलन कोट्स, राइट, उसके बाद में ही माइक्रोब्स दिखेगा एंड ऑल ऑफ इट, तो वो कब कैसे एंड कौन से पॉइंट पे, दिस इज कवर्ड इन दिस स्कीमा. So the dynamic alteration is the invisible vital force is compromised by a latent miasm. No physical evidence exists. Dynamic है, obviously physically वो नहीं दिखेगा. Physiological or the functional change which starts and the second part of it. So the cell's function alters. This is an this is a reversible state driven predominantly by sora, not yet identifiable under a microscope. Functionally changes start हो रहे हैं, structurally nahi, and this is driven by the sora part of it. The critical time frame, the crucial window of advancement where functional issues begin solidifying into physical damage. Next is the pathological or the structural change where visible structural damage occurs. The disease is now observable, irreversible and driven by the syphilitic element. ठीक है, यहाँ पे जाके आपको सेल पैथोलॉजी, स्ट्रक्चर पैथोलॉजी एंड ऑल ऑफ इट यू आर गोइंग टू सी ऑन दिस स्टेज. ठीक है, तो अपना स्कोप ऑफ ट्रीटमेंट is going to be extremely well if you are able to stop it off at functional change. ठीक है, even till the critical time frame जहाँ पे एडवांस हो रहा है फंक्शनल टू स्ट्रक्चरल, इट इज स्टिल समथिंग which is reversible. You can stop the progress of the disease there and there if you are able to diagnose that disease according to the certain miasm that it belongs to and pick up an excellent single simple remedy. ठीक है, हैनेमन के जो कार्डिनल प्रिंसिपल्स थे, ज्यादा से ज्यादा we will try to follow those of, and in classical homeopathy we follow those exclusively. ठीक है, पॉलीफार्मेसी के अपने अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं, इट ऑल्सो हैज इट इफेक्ट्स, बट अगेन वो अपने कार्डिनल रूल्स में नहीं आता है. सो वंस इट बिकम्स अ स्ट्रक्चरल चेंज, वंस इट बिकम्स समथिंग विच इज इरिवर्सिबल, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ट्रीट. फिर वहां पे जाके आ जाता है पैलिएशन एंड सप्रेशन का कॉन्सेप्ट. ओके, now this, the statistical danger of inheritance, the law of inheritance, that Allen has spoken about over here and in his book in detail, is
कैसे डिजीजेस इनहेरिट होती है, ठीक है। ये करस्पॉन्ड, दिस करस्पॉन्ड्स ब्यूटिफुली टू what we called as the dominant and the recessive genes. Do we remember that from our genetics part, from our genetics text? तो सिनेरियो ए लेंगे, सिनेरियो बी लेंगे, ठीक है। फर्स्ट इसमें ओनली व्हेन वन पेरेंट is under the influence व सिंगल इन्फ्लुएंस, एक इसमें ही ना माइजमेटिक इन्फ्लुएंस ज्यादा है या कोई भी। नाउ विल टेक अ डिजीज फॉर एग्जांपल डायबिटीज, ओके। डायबिटीज वेरी कॉमन, more common than you think it is, ठीक है। we are the diabetic capital of the world, India. So एक पेरेंट को डायबिटीज है, दूसरे पेरेंट को नहीं है, तो चाइल्ड में डायबिटीज होने का चांस either juvenile or later in the future as an adult, it becomes 50-50, ठीक है। वो डोमिनेंट भी हो सकता है, वो रेसेसिव भी हो सकता है। सो ऐसे कंडीशन में इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि जब हम लाइफस्टाइल चेंजेस बोलते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बोलते हैं टू द पर्सन हु इज डायबिटिक, राइट, इट बिकम्स इम्पोर्टेंट कि आगे जाके उनके ऑफस्प्रिंग्स में वो डिजीजेस ना आए। सो इफ वन पेरेंट कैरीज द माइजमेटिक इन्फ्लुएंस, द डेंजर ऑफ द डिजीज डेवलपिंग इन द चाइल्ड इज लेसेंड, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, उसका चांसेस। सिनेरियो बी में हाइट एंड प्री डिस्पोजिशन है, ठीक है। हाइट एंड प्री डिस्पोजिशन का मतलब दोनों पेरेंट्स आर डायबिटिक, अभी इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हेन इट वाज डायग्नोस्ड और व्हेन इट वाज डेवलप्ड, ठीक है। या तो एक जेस्टेशनल भी हो सकता है फॉर द मदर, या जेस्टेशनल के बाद समटाइम्स इट गोज ऑफ ऑन इट्स ओन विद डाइट एंड रेजिमेंट टुगेदर अ प्रॉपर केयर, इट डजंट रियली बॉदर दैट मच, ठीक है। वो अप बॉर्डर साइड पे रहेगा, वो अपर रेंज पे रहेगा, बट इट डज नॉट predominantly come up as diabetic, ठीक है। वो प्री डायबिटिक स्टेट में भी रह सकते हैं। एंड इफ द फादर इज डायबिटिक, और इन दोनों के फैमिली हिस्ट्री में अगेन डायबिटीज इज समथिंग विच इज प्रीडोमिनेंट, ओके, ऑन बोथ द साइड्स, सो इनमें माइजमेटिक लोड ऑफ दिस डिजीज डायबिटीज मेलिटस इज हाई। तो इसमें जब ऑफस्प्रिंग्स आएंगे, इनके जब बच्चे होंगे, सो दैट दे बिकम वेरी वल्नरेबल टू दिस डिजीज, ठीक है। तो इसमें प्रॉपर एजुकेशन अबाउट दिस डिजीज in general, and how well they should be, observing the child, how well they should be observing themselves becomes important, because इसमें क्या होता है, when both the parents carry the miasmatic influence, the chances of disease manifestation are severely heightened, families suffer generationally, ठीक है। The ultimate source of bacteria is the inherited predisposition. Without the inherited miasmatic soil, the bacteria cannot take root, ठीक है। तो miasmatic diathesis जब बात करते हैं, we talk about this danger of inheritance of diseases, okay। तो अपने लिए ये एक हैंडआउट जैसा सर्व होगा, and I would like to mention over here what we are going to take in part 2, a bit of it, just to give you a fair idea कि skin eruptions का role क्या है in vital force का defensive mechanism करके, ठीक है। So the significance of skin eruptions in the vital forces defensive mechanism. Skin eruptions, first of all, they're not local diseases, as we know. They are the result of perverted changes within the organism. अभी ये जो वर्ड है ना perverted, आपने देखा होगा 3-4 बार आ गया। So this is the word which is used by J.H. Allen. तो ऐसे certain words हो जाते हैं ना, when an author is using repeatedly, you also use that in your answers. ये दिखने चाहिए words, ठीक है, तभी अपने को पता चलेगा you're writing something that the author has spoken about. Okay, so the vital force throws disease out onto a non-important part of the body, the skin, to preserve the internal life. Suppression of these eruption causes the diseases to move inward. A vital force खुद वो चीज को, वो एक डिजीज को आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी पे, द स्किन पे थ्रो कर रही है, एंड व्हाट डू वी डू सो दैट इंटरनली वाइटल फोर्स सेफ रहे, एंड व्हाट डू वी सप्रेस दैट विथ व्हाट लिनेमेंट्स, ऑइंटमेंट्स एंड ऑल ऑफ इट। तो उससे व्हाट आर वी डूइंग, वी आर driving the disease inwards. With the proper homeopathic treatment, allows the disease to recede in the reverse order of its appearance. ये रूल तो अपने को याद है, ठीक है। तो ये हम लोग इन डिटेल पार्ट 2 में लेने वाले हैं, ओके। So, to sum up our lecture, this is what the diagnostic synthesis of these two divergent parts of physiochemical school and the dynamic doctrine, ठीक है, of Hahnemann and Allen is there.
अब प्राइमरी फोकस कैसा था, मटेरियल एंड केमिकल विद फिजियोकेमिकल, दैट्स कॉक्स एंड वर्कआउट. Know the names, guys, know the names and write the names when this is an answer for you. Okay. Vital force and potentiality with Allen and Hahnemann. Microscopic invasion acquired is the origin of disease. Derangement of life force and inherited miasms. ठीक है. Without Hahnemann's instruction it would be impossible to comprehend the true dynamic nature of disease and cure, right? अगर ये होता ही नहीं, हैनेमन की फिलोसफी होती ही नहीं, we would still be chasing only the material cause of the disease, right? So this is a handout which you can use as a last moment revision thing, and that's available on our Instagram page at the Organon Classroom. ठीक है. Please follow it up, guys. All the important announcements and these handouts will be uploaded there. This is again a second one where you can see. अभी ये जो सो रहा है ना, इसमें हम लोग ने डिटेल में बात नहीं किया है, बट दिस फॉर्म्स अप इन आर पार्ट 2 विच विल बी कमिंग अप सून फॉर दिस कॉन्सेप्ट ओनली. ठीक है. तो ओल्ड स्कूल पैराडाइम क्या रहा है, सेल्यूलर पैथोलॉजी, राइट? इसकी डिटेल जैसे यहाँ दी गई है. फिर होम्योपैथिक जो रेवोल्यूशन आया, उसके बाद आया होम्योपैथिक. That's all for today's lecture. We shall come up next with explaining the chronic miasms and pseudosore according to Dr. J.H. Allen, and to explain in detail about miasms and the relationship to pathology and abnormal growth. Okay, so for this question, the lecture today becomes just part one of it. Part two will be coming up in our next video, which will be episode 3 for our lecture series in the Organon Classroom. All right, there will also be an introduction to Sora and Pseudosora, which is a large topic, but we'll be breaking up into parts so it becomes easier for you to understand. All right, any suggestion, any requirement, any need, please write up in the comments or reach me out in my DM at the Organon Classroom on Instagram. Okay, learn well, live well, have fun, guys. Thank you so much. Thank you so much.